So Bismillahirrahmanirrahim, we are talking now about the Middle English period, and we'll be talking about this in detail in a way, like objective type of it. So this is a period from 1100 to 1500 almost, and this is known as Anglo-Norman Age, जो कि Norman conquests के बाद start हुई, यानी जो French invasion थी उसके बाद जो कि by the 800s में French लोगों ने आना शुरू किया, and afterwards we have a huge invasion from them, and then they became settlers, they invaded, they conquered, and like उसके बाद ये सारा एक domination change हो गया basically. So Normandy was the area, the French area, and the Duke of that, it was the title of William the Conqueror, the king of the time, who came to conquer England, and he conquered it. उसने इस area को conquer कर लिया. So William the Conqueror is important figure in history and literature. उसके इस conquest के साथ ये यानी William the Conqueror के साथ वो Norman conquest start होती है. So Norman conquest begin with the arrival of William the Conqueror. This started in 1066 AD. So the word Norman or Normandy, the Duke of Normandy, the word that Normandy comes from Norman, and Norman comes from Norseman, which means Northman. यानी North की तरफ से आने वाले या French North area से आने वाले, they were afterwards what they were known as Norseman or afterwards Norman, जहाँ से word Normandy हमारे सामने आया. Even World War के अंदर भी Normandy का एक बड़ा रोल है. So Normans spoke a rural dialect of French. Since they came from there, तो एक rural dialect था French का जो वो बोलते थे. Now in this way, पहले German language किसी हद तक आ चुकी थी. German के साथ एक mixture हो रहा था English language का. अब French language भी यहाँ पे पहुँच गई, और French language भी 800 ADs के बाद से यहाँ पे मौजूद थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप हो चुकी थी. एक जिसका लैंग्वेजेस, सारी लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन होती हैं, तो जर्मन के बाद फ्रेंच भी उस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रचना बसना शुरू हो चुकी थी. सो एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स एंड नोबिलिटी ऑफ इंग्लैंड फॉर मोर देन 300 years. सो नेक्स्ट टू 300 years से ये इंग्लिश लैंग्वेज के थे जो कि ऑफिशियल लेवल पे किंग या नोबिलिटी इस लैंग्वेज को यूज करते थे. यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सरकारी जुबान थी वो फ्रेंच को यूज किया गया. The first monarch since before the conquest to have English as his mother tongue was Henry IV, जिसको चौसर ने सर्व किया. So उससे पहले जितने भी मोनार्क्स थे वो अपनी उनकी मदर टंग जो थी वो फ्रेंच ही थी, वो फ्रेंच ओरिजिन से आ रहे थे. Henry IV was the only or the first king, not only, he was the first king जिसकी मदर टंग English थी. Doomsday Book in those time was written in 10th century, basically 1086. It was written in Latin. ये क्या था Doomsday Book? Very important book थी उस जमाने में. It was a manuscript about a greater survey of England, और उसके parts जिसमें Wales भी शामिल था. ये compose की गई William the Conqueror के order पे. So Doomsday Book is important. The official language of the royal court. So royal court और ecclesiastical court में difference है. जो royal court थी यानी जो सरकारी जुबान थी जो महल में यूज होती थी, that was French. और इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि afterwards we see कि जो nun थी Prioress in the character or in the work of Geoffrey Chaucer, so वो French बोलने की शौकीन थी because she spent most of her time in royal society, in royal palaces. तो to imitate them she would speak French language. तो ये इससे पता लगता है कि French was the official language of the country, and Latin was used as the language of church. और इसकी एग्जांपल है कि Sumner, the character in Chaucer's prologue to the Canterbury Tales, वो जब सुनता है वहाँ पेशरफ्त ecclesiastical court में, religious court में, तो वहां पे सारी प्रोसीडिंग्स लैटिन में होती हैं. सो उसको भी लैटिन के कुछ वर्ड्स आते हैं. सो चर्च में लैटिन यूज होती थी.
vast majority of lower class people, so they started speaking English language. So सरकारी ज़ुबान फ्रेंच थी, रिलीजियस लेवल पे लैटिन, और जो कॉमन पीपल थे, मिडिल क्लास पीपल और लोअर मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास स्पेशली, ये वो थे जो कि इंग्लिश स्पीकिंग थे, क्योंकि तब फ्रेंच और लैटिन को बड़ी सुप्रीम लैंग्वेज समझा जाता था और इंग्लैंड को एक बेस लैंग्वेज समझा जाता था. और यू कैन से कि फ्रेंच एंड लैटिन they were like acrolect, mesolect, and English was basilect for them. So it is a mixture of Old English and Anglo-Norman that usually referred to as Middle English. जो Old English अभी तक बन चुकी थी, जिसमें German words भी थे और English words भी शामिल हुए और कुछ Latin words भी थे, उनमें जब ये French language ऐड हुई, यानी Normans आए, तो उसके बाद जो language बोली गई, that was known as Middle English. Middle English romances, like romance was a principal form of secular literature in late medieval age, medieval England. So ये जो romances थे, they were primarily secular in nature. More than 80 verse romances were written in meters and alliteration. 80 से ज़्यादा romances लिखे गए उस दौर में जो secular nature के थे, और उसमें प्रॉपर मीटर्स यूज किए गए और एलिट्रेशन यूज की गए. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि एंग्लो सेक्सन से लेके चौसर के टाइम तक एलिट्रेशन इज इंपॉर्टेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, इफ यू गो थ्रू द होली कुरान, यू विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन बेसिकली क्या है? हम लैंग्वेज को यूज करते हैं एज अ मीडियम, जिसके जरिए हम लोगों को मुखातिब करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्री लोक्यूशनरी एक्ट है, कि हमारे उन वर्ड्स का असर हो किसी के ऊपर, तो वो पोइटिक लैंग्वेज में बड़ा ज्यादा अच्छा आता है, लोग उसको ज्यादा सराहते हैं, इम्यूज होते हैं. एंड एलिट्रेशन एड्स इंसल्ट टू इंजरी, बड़ा उस पर तीली का काम करता है जल्दी पे. सो अब आप इफ यू गो थ्रू होली कुरान, सो यू विल सी के व्हाट अ ब्यूटीफुल यूज ऑफ एलिट्रेशन अल्लाह हैज डन. क्योंकि जो होली बुक है उसमें हम जितनी भी ये हम डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं, इनका यूज है वहां पे. और जब एक आम बुक में इनका यूज है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि एक इतनी कमाल किताब में ये ना हो. सो यू कैन एक्सप्लोर इट योरसेल्फ. सो किंग ऑथर बाय जेफरी ऑफ मॉनमॉथ वाज रिटन. सो दिस वाज अ बुक, किंग ऑथर, जो कि जेफरी ऑफ मॉनमॉथ ने लिखी. इट वाज रिटन इन 12th century. So Gawain and the Green Knight, it was written in late 14th century. ये भी important book थी अपने time की. So these plays flourished from a reign of Henry II to that of Elizabeth. So तकरीबन Elizabethan जो period था, उससे पहले या यूं कह लें कि शेक्सपियर, मॉलो, इनसे पहले जो plays ज़्यादातर लिखे गए, perform हुए, they were known as miracle or mystery plays. जीन बॉडल्स के जो प्लेस थे, सेंट निकोलस और हेरी, ये उन मिरेकल्स या मिस्ट्री प्लेस की एग्जांपल्स हैं. अपार्ट फ्रॉम देम देयर वर मोरालिटी प्लेस जो कि इंक्लूड किए गए, जिसमें खास सलाह प्रिजर्वेंस, विजडम, मैनकाइंड एंड एवरीमैन, ये मोरालिटी प्लेस थे उस टाइम के. Langland was born and died in 1332, and he was died somewhere between 1386 to 1400. So 1332 में पैदा हुआ, around 1400s he died. William Langland was a famous poet. Piers Plowman, it was written from 1370 to 1390. So it was written by William Langland. ये बड़ा important MCQ है और अक्सर ये आता है. So you need to know कि Piers Plowman है, that was written about the peasants, agricultural system, ये वो इसके बारे में. So William Langland happens to be the writer. Mirror Delaware was written by John Gower. He was from 1330, born in 1330 and died in 1408. So this poem had 29,000 lines. So it was a massive poem written in 1380.
Peasants' revolt was a major theme of John Gower's Vox Clamantis. So ये peasants revolt जो हम पढ़ते हैं उसमें Chaucer में यानी 14th century का जो background था जो कि important works incidents हो चुके थे, तो उसमें ये जो revolt बड़ी important थी जिसको हमने discuss किया था detail में. So this revolt was discussed as a major theme in Vox Clamantis जो कि John Gower ने लिखी थी. A Confessio Amantis by Gower, by the same poet, इसकी 33,000 lines थी. Chaucer was born in 1340s. We're not sure about his year. So he is somewhere between 1340 to 1344. इनके दरमियान में है Geoffrey Chaucer. He died on 25th of October 1400. So this is what we are sure about. He was the first writer to be buried what has since come to be called Poets' Corner in Westminster Abbey, जहाँ पे बहुत सारे और भी शोरा-ए-आफाक लोगों को दफनाया गया. So he happens to be there. Westminster Abbey is a huge cemetery जिसमें Poets' Corner है. So उस Poets' Corner में इसको दफनाया गया. So the father, Chaucer was known as the father of English literature and English poetry and also of English language as well. क्योंकि इससे पहले English language जो थी, that was not properly used for writing complete formal poetry. So Chaucer ने इसको use किया, इसके अंदर changes लेके आया. It was an uncouth material जिसको इसने बड़ा refine करके, branded करके लोगों को दिखाया. So these are the works of Geoffrey Chaucer: Canterbury Tales, Troilus and Cressida, The Legend of Good Women, The Parliament of Fowls, The Book of the Duchess, The House of Fame. So in 1381, peasants used phrases from this work in their revolt rhetoric. So जो revolt थी उसमें Piers Plowman से भी उन्होंने बड़े quotations और phrases use की. So it was important in a way कि इसको एक नारे के तौर पे उन्होंने use किया क्योंकि इसके topics काफी similar थे. Now that a Breton cleric during the Middle Ages period, उसने ये work लिखा था, which was the history of kings of Britain. So ये history of kings of Britain was written by a cleric, जो कि एक religious cleric था. The Middle English period जो था उसमें Archbishop Canterbury का Saint Thomas Becket था. So Saint Thomas Becket happens to be the same saint जिसको who was martyred by people. King ने knights भेजे जिन्होंने इसको शहीद कर दिया because he was not accepting the unjust rule of the king. तो king ने इनको मरवा दिया. Or later on he was guilty of it. So first autobiography जो in English literature में आज तक dictate हुई, that was by Margery Kempe. So Margery Kempe ने पहली autobiography लिखी English language में. The Fall of Princes, French book थी, बड़ी important book थी. इसको translate किया John Lydgate ने जो कि एक innovation थी अपने time में क्योंकि तब translations इतनी frequent और common नहीं थी. Chaucer's The Nun's Priest's Tale, इसका जो sequel था वो रॉबर्ट हेनरिसन ने लिखा. यानी उसके afterwards क्या हुआ होगा, how did he connect it with the Nun's Tale or Nun Priest's Tale? So it was Robert Henryson. So हमने Geoffrey Chaucer को detail में उसके MCQs भी discuss करने हैं when we come to literature portion. So Canterbury Tales को हम detail में करेंगे और इसके बाकी works को, so don't worry about it. He wrote a series of Arthurian romances from prison. So it was Sir Thomas Malory. Thomas Malory जो था उसने एक prison में बैठ के इस सारे works लिखे जिसमें chiefly he was working on romances. So it happens to be very interesting in a nature. Like prison में बैठ के he was working or he was being so prolific. But afterwards we have Canterbury Tales. So this work was written in the Midland dialect
from which the modern English descend. तो ये आपने याद रखना है कि ये जो Canterbury Tale का dialect जो इसमें use हुआ English language का, that is the Midland dialect of English. The writer of Troilus and Cressida, who was also son of a wealthy wine merchant, so that was Geoffrey Chaucer, who wrote Troilus and Cressida, और एक wine merchant का बेटा था. ये जो lines हैं, these hurls in at the hall door an unknown rider, half a giant on earth I hold him to be. So these lines were taken from Sir Gawain and the Green Knight. इनकी initial lines हैं ये. Julian of Norwich. So इसने एक book लिखी जो कि इसने अपने ghostly visions के meanings ढूंढने के लिए उनके बारे में सोच के लिखा. So ये basically she was a female writer of the time. So this play has these characters in it, like morality or mystery plays में. So the second Shepherd's play, जिसमें Cole, Gibb, Daw और Mac के characters आते हैं. So that is second Shepherd's play. Characters in this play include knowledge, beauty, five wits and discretion. यानी personification use की गई और इनको as a character use किया गया. So किस play में किया, किस work में किया गया? That is Everyman. Everyman जो poetic book थी उसमें, जो work था literary. So this Middle English ballad inspired many 20th century songs. So ये including Bob Dylan's A Hard Rain's Are Gonna Fall. So ये जो songs थे ये इस ballad से inspired थे जो कि लिखा गया था Lord Randall ने in the old time. So in what Middle English ballad does the speaker say, "Oh mother, mother, make my bed. Oh, make it soft and narrow"? So that is a ballad by the ballad by Bonny Baba Allen. In this poem, Chaucer solicits his patron, the king, Henry IV, to provide him with some cash. So उसने एक poem लिखी when he was hard at cash, जब उसको जरूरत थी पैसे की. So he practically composed a poem जिसका नाम था Complaint to his Purse, जिसमें वो उससे पैसे मांगता है king से. Sir Gawain and the Green Knight में Gawain जो है वो एक swamp game start करता है host के साथ. He takes 3 kisses, a magic belt from his host's wife. तो उसमें से क्या चीजें वो return करता है? So 3 kisses. This was important scene from them. So Lee Morte the author. So Lee Morte the author begins with these lines. It befell in the days of Uther Pendragon when he was the king of England. So Middle English writer जो कि Coles Hill से भागा, यानी उस prison से एक boat के जरिए swim करते हुए वो Colchester jail से भी भागा, अब लोगों से लड़ते हुए. So it was again Thomas Malory, जिसके बारे में हमने पढ़ा already, that he was working on so many romances even when he was in jail. So it was Sir Thomas Malory. So these were MCQs from Anglo